Hello everyone. Hello, guys. A very good afternoon. Yes, a very good afternoon. Who all are there? Shivani, Nandana, Satsangi, Ankita, Nishta. Do you namaste? Remember? Yes, Tarun, you were away from the classes from so long, है ना? Kajal, Vansh, Suyash, Sumaya, Siddharth, Mehak, Nandini, Turya, Irfan, Kriti, Banin, Rudransh, Suya, Shivam, Rahul. Who all are there? Message me once. Harsh, Irfan. Yeah, it's done. I'm good, bache. A very good afternoon to you all. Mehak, Vinisha, Shubham, Supriti, Vishal, Kunal, Anshika, Abhishek, and Prisha, Sejal, Mitlesh, Sneha. Okay, Aditya just joined. Yumendra. Kajal, Harshit, sorry for that, but now I can manage everything easily. Okay, that's great. Rohit, okay. Kavin, you okay. हाँ जी राहुल, never. अरे it's okay. कोई दिक्कत नहीं है. If you have missed Arya's birthday, I will share the clippings with you. Whenever I will be getting them. Okay. Okay, you didn't understand the graphs. I will make you understand today. Okay, so I got to know where we were in the last class. Let's begin with it. So we were doing the chemical kinetics. In the chapter chemical kinetics, we have understood what is the rate of reaction. So basically, rate of reaction can simply be represented by dc over dt, right? Or you can say dx over dt. You know? So see, I'm saying because I'm considering the concentration, the change in the concentration per unit time. And as per the rate law, rate is equals to k, which is the rate constant. If there is a zero order reaction, you can say k0, k1, k2, whatever you can say. Hai na? So this is basically equals to k and the concentration of the species that took part in the rate determining step. है ना? की पावर ऑर्डर. तो अगर आपका कोई भी रिएक्शन है a plus b gives you c, तो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ a की पावर ऑर्डर और b की पावर ऑर्डर. वो कुछ भी हो सकता है ना? इफ आई एम सेइंग दैट a एंड b अगर ये दोनों पे डिपेंडेंट है तो द ऑर्डर विल बी इक्वल्स टू, तो लेट्स से दिस इज इसकी पावर l एंड इसकी पावर m, तो ये इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? ऑर्डर विल बी इक्वल्स टू l plus m, right? और इफ आई सेड दैट दिस इज 1a and this is 2b, so molecularity is equals to molecularity is equals to 1 plus 2, that is 3, है ना? So this is molecularity, okay, and this is the order, ठीक है? That is L plus M is the order, okay, because this depends upon the rate determining step. That depends upon the rate determining step. That is the mechanism, है ना? This rate law is coming from the mechanism that we know. For the rate of reaction, we also know that how to write down a rate expression, है ना? उस expression को कैसे लिखना है वो भी मैंने आपको बता दिया था. Just like for this particular reaction, minus का 1 by 1 dA by dt is equals to minus का 1 by 2 dB by dt is equals to 1 by 1 dC by dt, right? Yeah, this will be positive, this will be negative, this will be negative. So this is the rate law expression. Exactly. Molecularity basically depends upon the net reaction or the overall equation. Okay, and it is basically the sum of the coefficients of the reactants only. तो यहाँ पे भी हमने reactants ही लिए थे, right? And यहाँ पे भी मतलब like everywhere we are talking about reactants only. So when I want to write down the rate equation, so I'm saying that the reactants A and B. I'm not saying C. Okay, I'm saying A and B participating in the reaction. That is की power L and M. Okay. अच्छा, molecularity can never be zero. क्या ये molecularity आपका zero हो सकता है? No, never. But this order can be zero. But order can be zero. Okay. चलो. Yeah, molecularity cannot be negative. चलो, so after that we have discussed the kinetics of zero order reaction. हम लोगों ने kinetics study किया था for the zero order reaction. ठीक है, आज वापस से करते हैं और इसको हम लोग दो तरीके से डिस्कस करेंगे आज. If we are saying Siddharth that the order is zero, this totally depends upon that the rate determining step, the rate of reaction does not depends upon any substrate. Okay, वो substrate के nature पे depend नहीं करती है. That is constant. Okay, so basically if you will हाँ जी, it does not depends upon, it is constant. Rate हमारा same रहेगा. Okay, I'm just like I'm saying that कि जैसे if you are talking about कि हाँ, जैसे हम लोग अपने इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं. अगर आज घर में लाइट आ रही है, नहीं, इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द लाइक. ओके, तो जैसे क्या हमारा यू नो हाँ जी, डेफिनेटली देयर आर मेनी रिएक्शंस. या इफ यू आर ट्रैवलिंग थ्रू अ कांस्टेंट स्पीड, तो इसका मतलब क्या है? मेनी अदर फैक्टर्स आर लाइक डज नॉट डिपेंड्स, है ना? योर ट्रैवलिंग डज नॉट बीन अफेक्टेड बाय एनी ऑफ द फैक्टर. इट इज नॉट गेटिंग अफेक्टेड बाय द वेदर, इट इज नॉट गेटिंग अफेक्टेड बाय द ट्रैफिक. ओके, सो बेसिकली यू आर मूविंग विद द सेम रेट. Okay, with the 60 kilometers per hour. Okay, so अच्छा आप एक बात बताओ, traffic congestions are the factors, है ना? So if you travel by bus or if you travel by car, these are the factors on which our rate depends. But if you will travel by train, so will these be the factors? The traffic congestion or the toll will be the factors on which the rate of reaction depends. If we will be traveling through the airways, है ना? That is if we will be like using the air transport. So whether these will be the factors on which our rate determining step depends. No ना? Very simple. So this is what I'm telling you. Okay, so means कि जो हमारा rate है वो depend नहीं कर रहा है on the several other factors. चलो, so let's begin with it and kinetics discuss करते हैं zero order reaction का. Though I discussed with you in the last class, but still I will be repeating it again today as well. Okay, तो सबसे पहले if I'm saying zero order reaction, let's say the reaction is A. A is basically my reactant, and this is giving me P as a product. Clear? So the rate of the reaction के लिए तो first of all I need the concentration terms, right? What is the concentration of A? What is the concentration of P? So initially we would be having the concentration of A or P. Initially, when we are beginning a reaction, we will be having the concentration of A only. So let's say this is small a, and what about P? That is zero. Okay, so at a certain interval time t, at time t,
ठीक है, you have left your home and you are traveling with a car, तो आपने क्या किया, अपना घर छोड़ दिया है and at a certain moment of point your mom is calling you and asking you okay where you have reached, so आप क्या कहोगे, you have reached x, क्या आप x तक पहुंच चुके हो, no mama, a minus x is left, अभी इतना डिस्टेंस रहता है ना, तो मतलब a minus x है ना, initially I was having the concentration a but I am still left with a minus x, x has been done, x has been formed as a product, लेकिन अभी भी a minus x बचा है ना, so this is what you would say. So as per the first method हमारा rate कैसे determine करते थे हम लोग, rate is equals to as per the first method dc by dt, so here I would say d, यहाँ पे मुझे क्या बोलना चाहिए, concentration dA by dt, okay, तो I would say dA concentration of A by dt, okay, चलो ठीक है, okay, positive or negative, that is negative, that is negative, this is one of the thing, one equation, okay, as per the rate law, rate is equals to k naught और a की power concentration of a की power order यानी कि I'm saying that this is a zero order, a की power 0, this is it, okay, very nice. So basically I can write from these two reactions what I can write, from these two reactions what I can write, or you can say that rate is equals to k naught, I can write it as minus का dA by dt is equals to k naught, okay, so I can relate these two, minus का dA by dt is equals to k naught, is this fine, okay, now if I have taken this all as per the reactants ना, मैंने सबको as a reactant के terms में लिया है ना, यहाँ पे भी I have taken reactants, here also I have taken reactants, okay, so we are considering at initially or at time t, so what about it, we are considering initially or at time t, initially, so if initially I would say, I can say that initially I could say that minus का d of dA by dt is equals to k naught, right, if I'm considering it initially, ठीक है, initially, but I'm saying that please consider it at time t, at time t, so I can say that minus का d by dt of a minus x is equals to k naught at time t, yes, okay, now can you please calculate it, this is a differential equation, right, so we can also do the cross multiplication, find out its differential rate law and find out its integrated rate law, I want these two rate laws, find its integrated differentiated rate law and its integrated rate law, find these two please, पता करो, yeah, this is an equal sign, this is equal, k naught t is equals to xo, okay, and what is the differentiated rate law, dx by dt is equals to k naught, is this true, are you getting these two things, check करो यही आ रहा है, so what you have to do, you have to do the variable separable, आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा, then you have to do the variable separable, right, नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव इज बेसिकली सेइंग कि ये आपका फॉर द रिएक्टेंट्स है, okay, so negative is representing that it is for the reactants, done, okay, अच्छा सेम चीज if I consider here, I have considered all this for the reactant side, मैंने ये सब कुछ किसके लिए कंसीडर किया है, for the reactants, okay, so as soon as there is a disappearance of reactants there will also be a appearance of product, तो जिस रेट से आपका disappearance होगा reactants का, right, उसी रेट से आपका appearance होगा product का, tell me this, yes, okay, so if I have to calculate everything for the product, तो अगर ये सब अगर मुझे product के लिए calculate करना है तो how would you do, तो अगर मुझे ये सारा कैलकुलेशन फॉर द प्रोडक्ट करना है तो कैसे करोगे, तो मतलब रेट इज इक्वल्स टू प्लस का dp बाय dt हो जाएगा, राइट, और ये एज पर द रेट लॉ, एज पर द रेट लॉ जो आपका रेट होगा दैट विल बी इक्वल्स टू k नॉट और प्रोडक्ट p की पावर 0, और आई कैन से दैट रेट इज इक्वल्स टू k नॉट, आई कैन से दैट dp p is basically at time t, so at time t I can say that this is x, that is dx by dt, at time t this is x, so I can say dx by dt is equals to k nott, okay, so now if you have to do find out the differential rate law and if you have to find out the integrated rate law, what it would be, dx by dt is equals to k naught or integrated is k naught t, so this point is clear, it's clear हुआ, whether you find out the rate of disappearance of reactant or whether you find out the rate of appearance of product, both will give you the same values, both will give you the absolutely same values, here you were just getting कि मैम यहाँ नेगेटिव आ रहा है यहाँ पॉजिटिव आ रहा है, so this negative and that positive is basically depends and is basically telling you about the ये आपको ये बता रहा है कि whether we are talking about the reactants or whether we are talking about the product, whether there is a disappearance or whether there is a appearance, ठीक है, वो बस आपको ये बता रहा है कि क्या घट रहा है क्या बन रहा है, this is the only point, otherwise there is no other thing, so basically for the reactants the graph will be having a negative slope and for the product the graph will be having a positive slope,
right? देखो जरा, if here we are getting the equation as k naught t is equals to x, so what I can say, अगर मुझे यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करना है, so if I have to plot a graph and the intercept is and c is 0, so at time t what will be the c? क्या आप c का वैल्यू निकाल सकते हो? At time t what will be the c? c would be anything, or let's say c would be anything, ठीक है? तो अगर हम लोग टाइम 0 रखते हैं तो हमारा c 0 आएगा, otherwise it would be anything, right? So I can say that c could be any intercept. तो आपको पता है ना, when you integrate something you have to write plus c, so whenever you integrate anything आपको plus c को देना ही देना होता है, तो k naught plus c आना चाहिए था, है ना? तो k naught plus c आना चाहिए था, राइट? ओके, तो इंटरसेप्ट तो आएगा ही आएगा. सो इफ यू वांट टू पुट द टाइम 0, इफ यू वांट टू पुट द टाइम t as 0, यू कैन फाइंड व्हाट विल बी द इंटरसेप्ट. तो इंटरसेप्ट विल आल्सो बिकम 0, बट वी आर कंसीडरिंग एट टाइम t, ठीक है? तो अगर मैं टाइम t कंसीडर कर रही हूं तो दिस विल बी माय y इज इक्वल्स टू mx plus c. तो अल्टीमेटली दिस इज अ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन. y if I consider it as x and x if I consider it as t, है ना? तो मेरा स्लोप क्या हो जाएगा? So if I'm considering as the reactant side, the slope will be negative, and if I'm considering the product side, the slope will be positive. So I could say that the product is forming at an intercept t, है ना? और अगर मैं अपने reactant side की बात करती हूं and I'm saying that this is x and this is t, तो the slope could be negative with an intercept c. तो ये मेरा ऐसे स्लोप आएगा. Is this clear? तो दिस इज अ प्लॉट बिटवीन x एंड t. तो ये प्लॉट किसके बीच में है? x के बीच में है एंड t के बीच में है, ठीक है? दैट इज एज द टाइम इज इंक्रीजिंग, द कंसंट्रेशन ऑफ x इज डिक्रीजिंग इफ यू आर कंसीडरिंग द रिएक्टेंट साइड, एंड इफ यू आर कंसीडरिंग द प्रोडक्ट साइड, द x इज इंक्रीजिंग. क्लियर? अच्छा, व्हाट अबाउट द रेट? तो अगर आपको पूछा गया है जस्ट प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन दिस, इसके लिए एक प्लॉट ड्रॉ करो, कंसंट्रेशन a, तो क्या बताओगे? बताओ. How what will be the plot? I'm saying that rate is equals to k naught concentration a की power 0. So this is rate, this is concentration a. So we know that at any concentration, because this is 0, means this will remain a, this will remain a की power 0, मतलब it is independent of a, but this will be k0. So can I say that it will be 0? क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि rate 0 रहेगा? No, it will remain any certain positive value. It will remain any positive value. क्या ये negative हो सकता है? No, it will be positive. It will be positive, but could be any value, but it remain constant, constant, constant. That is k naught. Is this clear? Is this clear? So that's why for the zero order reaction we can do these kind of plots. So you have to check whether you are plotting it for which kind of thing, है ना? आप किसके लिए इसको plot कर रहे हो? चलो अब एक तरीके से और करते हैं. Let's do the same thing one more way. The another way is if I'm saying that this is A to P and the reaction the A is getting converted into P at any time T. Okay, ये कुछ भी टाइम ले रहा है अपना T टाइम में, ये अपना P बना रहा है. Okay, so if I'm saying that here the initial concentration is C0, C0, C0. Why I'm saying that at time is equals to 0, it is C0. So the product will be 0 at time T. Time is equals to T. This is becoming CT. ठीक है, अब इसका concentration I'm saying that it is CT. So what will be P? P कितना हो जाएगा आपका? C naught minus CT, right? Initial अगर मेरा C naught लिया था, CT अभी भी बचा है, तो इसका मतलब C naught minus CT has been converted to P. I can say this C naught minus CT. Okay, again do the same thing with respect to reactant. करो. Do the same thing with respect to reactant and do the same thing with respect to product. Do this. So we can equate these two. This is your differential rate law. Now to integrate it, what do you have to do? Integrate it from time, from concentration C naught to CT. And if you want to like do the variable separable, do the variable separable. Integrate it, and with respect to the product, CT minus C naught is equals to K naught T. Is this the equation? CT minus C naught is equals to minus का K naught T. CT minus C naught is equals to minus का K naught T. Yes? अच्छा. Now do it for the product side. Or you can say that, or you can just do the opposite. C naught minus CT is equals to K naught T. आप ऐसे भी लिख सकते हो. You can also write it like this. C naught minus CT is equals to K naught T. Now is this fine? I have taken minus common. Is this fine? Everyone is getting this? C naught minus CT is equals to K naught T. Okay. Now do it for the product side. R is equals to positive dP by dt, and R also is equals to K naught की power P की power 0. So I can say that dP by dt is equals to K naught. This is my differential rate law equation. Now please do the variable separable. dP is equals to K naught dt and integrate it from concentration. कहाँ से कहाँ तक इसे integrate करोगे? The same. Yes, integrate it and tell me what will be the equation. CT minus C naught is equals to K naught T. Okay, CT minus C naught is equals to K naught T. So this is your integrated rate law equation. Is this fine? Right? At any time T. So we are doing all this at any time T. हमें किसी भी time T के लिए लिया है ना ये.
नहीं नहीं नहीं, सी नॉट टू सी टी, वी आर कंसीडरिंग द ओवरऑल कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन 0 से लेके फाइनल तक वी आर कंसीडरिंग। ओके, अब बताओ। ओके, तो नाउ टेल मी कि ये क्या है, व्हाट इज दिस? आई कैन से दैट, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल्स टू mx प्लस c? क्या आप इसे स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के फॉर्म में लिखोगे? So we have to plot a graph between t and the concentration at time t for the reactants. ये ग्राफ आपको प्लॉट करना है। You have to plot a graph between t and the concentration at time t for the product. ठीक है, ये ग्राफ आपको प्लॉट करना है। सो प्लीज फाइंड इट कि क्या आना चाहिए। टी, ये मेरा y एक्सिस पे ना CTR, तो कीप दिस ओवर द y एक्सिस। तो अगर मैं इसे y एक्सिस पे रखूंगी तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव का CT इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू mx, तो ये हो जाएगा मेरा माइनस का प्लस का C नॉट, ये हो जाएगा। इज दिस ट्रू? इज दिस ट्रू? इफ आई वांट दिस ओवर द y एक्सिस, अगर मुझे इसे y एक्सिस पे रखना है और इसको x पे रखना है t को, तो y is equals to minus का mx plus c. This is a straight line equation which I'm getting. So what it would be, तो हमारा क्या कह रहा है, ct at any concentration r, negative slope is there with an intercept c naught. तो मेरा कुछ initial concentration होगा, let's say this is my intercept which is the initial concentration c naught, and here I will be getting a negative slope, negative slope, negative slope, negative slope, negative slope. So at a certain time t, the graph will be like this. Is this true? So we will be getting a negative slope. अच्छा, अब जरा इसमें देखो, what is the graph I will be getting? I want CTP at the, this is for the product, so I want this over the y axis. So I can say that this is CT at concentration for the product is equals to k naught t plus c naught. मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, I can rearrange it. So as for this, I'm getting y is equals to mx plus c. तो यहाँ मुझे negative slope मिल रहा था, but यहाँ मुझे positive slope मिल रहा है ना? So I can say that with an intercept c naught. Initially कुछ था, कुछ तो product था, and then after the concentration is increasing, right? So this is what I can say. There will be a positive slope. So now you got it. We can calculate the rate for the reactants as well. We can calculate the rate for the product as well. तो हम किसी के लिए भी कर सकते हैं. The negative and the positive sign basically just tells you whether who is decomposing, who is degrading, who is disappearing, and positive signs tells you about that what is forming, what is appearing. ठीक है, मैंने प्रोडक्ट के लिए 0 से इसलिए नहीं लिया आदित्य, क्योंकि आई एम कंसीडरिंग एट एनी टाइम t. तो हो सकता है कि पहले से मेरा कुछ रिएक्शन इनिशिएट हो रखा हो, है ना? तो मेरे पास अगर मैं टाइम 0 ले लूंगी तो आई वुड से इंटरेस्ट भी मेरा 0 हो जाएगा। सो इफ यू वांट टू नो कि फॉर टाइम 0 पे क्या होगा, तो आप इसमें पुट करो t इज इक्वल्स टू 0, करो जरा यहाँ पे। अगर आपने कहा टाइम 0, तो ये तो आपका कंसंट्रेशन क्या रहेगा ऑफ प्रोडक्ट, कितना रहेगा? देखो निकल के कितना आ रहा है, देखो जरा। इफ दिस प्रोडक्ट एट टाइम 0, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या रहेगी? टाइम 0 मतलब k नॉट 0, इट विल बी, पुट टाइम इज इक्वल्स टू 0, आपको निकल के आ जाएगा, c नॉट निकल कर आएगा, राइट? हाँ जी। ओके, तो डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन वी विल बी गेटिंग टू नो कि हमें किसी पर्टिकुलर टाइम पे बताना है या फिर इनिशियल पे बताना है, कब बताना है। इन जनरल हमारा ये रहेगा। तो ये बात हमें क्लियर हो गया कि दोनों के जो रेट लॉज हैं, एक हमारे को एक्सप्रेशन मिलता है रेट लॉ के हिसाब से, एक हमारे को मिलता है सिंपल, जो हम फंडा कहते हैं कि रेट क्या होती है, उन दोनों को कंबाइन करो, फाइंड आउट द डिफरेंशियल रेट लॉ, फाइंड आउट द इंटीग्रेटेड रेट लॉ ओवर द होल टाइम पीरियड, ठीक है? इंटीग्रेट हमने इसीलिए किया है, एंड देन आफ्टर वी विल बी जस्ट गेटिंग द एक्सप्रेशंस एंड या वी कैन प्लॉट द ग्राफ्स। तो ये दोनों बात हमारे को समझ में आ गई। नाउ कैन वी डू द सेम फॉर द, अब देखो चलो, नाउ लेट्स मूव अहेड। हमारा क्या आया था, व्हाट वाज द डिफरेंशियल रेट लॉ? डिफरेंशियल रेट लॉ क्या आया था? डिफरेंशियल रेट लॉ आया था आपका dx by dt इज इक्वल्स टू, ये आया था माइनस का dA by dt इज इक्वल्स टू k नॉट, है ना? फॉर द जीरो ऑर्डर, फॉर जीरो ऑर्डर, राइट? और माइनस का dx by dt भी कह सकते हैं, और वी कैन से दैट माइनस का dx by dt, है ना? इन टर्म्स ऑफ x आई कैन से दैट माइनस का dx by dt इज इक्वल्स टू k नॉट, एंड इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या आया था? k नॉट t इज इक्वल्स टू x, ठीक है? दीस आर द टू थिंग्स दैट वी हैव रिसीव्ड। ओके, सो दिस इज एट टाइम t। चलो, नाउ वी विल बी डूइंग दिस फॉर टाइम 0। अब हम इसे अलग-अलग टाइम्स के लिए करेंगे। टाइम 0 के लिए करेंगे, टाइम, जस्ट अ मिनट, 1/2 के लिए करेंगे, 3/4 के लिए करेंगे, और टाइम मतलब कंप्लीट ड्यूरेशन के लिए करेंगे, ठीक है? सो नाउ वी विल बी फाइंडिंग द रिलेशनशिप्स फॉर ऑल द टाइम ड्यूरेशंस, कि किसी भी टाइम t पर क्या होगा, या टाइम है ही नहीं, टाइम 0 है तब क्या होगा, या जब मेरी पूरी रिएक्शन फिनिश हो जा रही है, द रिएक्शन इज गेटिंग कंप्लीटेड, उस पर्टिकुलर टाइम पे राइट क्या होगा, ठीक है? सो वी विल बी फाइंडिंग दिस थिंग ऑन डिफरेंट टाइम पीरियड्स। सो आई एम सिंपली राइटिंग dx by dt इक्वल्स टू k नॉट। चलो करो, फाइंड इट एट टाइम t इक्वल्स टू 0। मैं थोड़ा सा एक बात बता देती हूँ, थोड़ा सा बात जो मुझे बताना है वो ये कि इफ आई एम हैविंग a एंड आई एम गेटिंग अ प्रोडक्ट p, तो टाइम इज इक्वल्स टू 0 मतलब कोई टाइम है ही नहीं है, तो इसको बोला जाता है टाइम इज इक्वल्स टू 0, द कंसंट्रेशन ऑफ a वाज a, ठीक है? अब जैसे ही मैंने आपको बोला t टाइम इज इक्वल्स टू टाइम हाफ हो गया, इसको बोला जाता है हाफ लाइफ टाइम, दैट इज HLT। व्हाटएवर आई मीन बाय HLT, दैट इज हाफ लाइफ टाइम, ओके? और अगर मेरे को बोलना है क्वार्टर लाइफ टाइम, अगर मुझे क्या बोलना है क्वार्टर लाइफ टाइम, तो क्वार्टर लाइफ टाइम को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं t 3/4 से। कितने से रिप्रेजेंट करते हैं? मैं ऐसे लिख देती हूँ, t 0 से t हाफ से रिप्रेजेंट करते हैं, और क्वार्टर लाइफ टाइम को हम 3/4 से रिप्रेजेंट करते हैं, नॉट 1/4, 3/4 से रिप्रेजेंट करते हैं। 1/4 का मतलब हो जाएगा कि 1/4 रिएक्शन हुआ है, ठीक है? 3/4 से रिप्रेजेंट करेंगे, और हमारा जो कंप्लीशन होता है, कंप्लीशन को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे एट टाइम t से रिप्रेजेंट करेंगे।
ठीक है, दैट इज एट टाइम t, t is 100%, जो हमारा रिएक्शन 100% हो गया है. So if we have started our reaction at a और वो रिएक्शन अगर मेरा कंप्लीशन हो रहा है, दैट इज 100% रिएक्शन हो रही है, तो you can say that here there is a 0% रिएक्शन. यहाँ पे आप कह सकते हो हाफ लाइफ में मतलब 50% रिएक्शन हो गई है, क्वार्टर लाइफ टाइम में आप 75% रिएक्शन कह सकते हो कि कंप्लीट हो गई है. कंप्लीशन का मतलब है 100% रिएक्शन हैज बीन डन. इज दिस क्लियर? What do you mean by half lifetime? What do you mean by quarter lifetime? What do you mean by completion? है ना? तो 0%, 50%, 75%, 100%. रिप्रेजेंटेशंस भी मैंने आपको बता दिया. तो यहाँ पे अब डेफिनेट है कि सारा का सारा a 0 रह जाएगा और ये मेरा a हो जाएगा. इज दिस क्लियर? At any time t when the reaction is getting completed 100%, then this will remain 0 and this will become a. ठीक है? ये पूरा का पूरा मेरा a बन जाएगा. ओके. अब यहाँ पे मेरे पास इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या बचेगी? t हाफ पे. t हाफ पे हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन कितनी बचेगी? हाफ बचेगी, a by 2 बचेगी और a by 2 ही मेरा प्रोडक्ट बनेगा. राइट? है ना? a by 2 a by 2. अच्छा, और क्वार्टर लाइफ टाइम पे कितना बचेगा ये a? क्वार्टर लाइफ टाइम पे कितना बचेगा? ये कितना बचेगा? a by 4. वेरी गुड. a 1/4 ही तो बचेगा. a into 1/4. a by 4 हमारा बचेगा, है ना? 1/4 बचेगा और 3/4 की रिएक्शन 75% हो चुकी है. तो आई कुड से 3/4 ऑफ a will be formed. Is this clear? राइट? ओके. क्यों हम ऐसा क्यों कह रहे हैं यहाँ पे? क्योंकि द रेट वाज कांस्टेंट. रोहित, आई गॉट योर पॉइंट. बच्चे, फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन कांट बी डू दिस बिकॉज़ रेट तो कांस्टेंट है. रेट वाज कांस्टेंट. इट इज नॉट डिपेंडिंग अपॉन a. दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस. अदरवाइज आपकी अगर रेट में वेरिएशंस आ रहे हैं तो वी वोंट बी डूइंग दिस. तो हम ऐसे नहीं कर सकते हैं. यहाँ पे हमें पता है कि हमारा रेट कांस्टेंट है. सो दैट्स व्हाई वी कैन से कि आधे टाइम में आप आधा ही ट्रैवल कर रहे हो. कह सकते हैं ना कि इफ योर रेट इज कांस्टेंट तो डेफिनेटली अगर आप आधा टाइम में आधे डिस्टेंस ट्रैवल किए होंगे. Okay, so this is for zero order. This is for zero order. Please guys remind yourself again. This is for zero order. When the rate was constant. When the rate was constant. जब रेट हमारा कांस्टेंट था. हाँ जी, तो अगर हमारे पास इनिशियली एट टाइम 0 पे हम लोग बात कर रहे हैं तो वी आर हैविंग ओनली द रिएक्टेंट्स एंड देयर इज नो प्रोडक्ट एंड देन आफ्टर दिस a by 2 this will remain 1/4, this will become 3/4 and this is 0 and this is a. Is this clear? Okay. Now find this for different times. अब अलग-अलग टाइम्स पे मुझे बताओ कि आपका रेट क्या रहेगा? मतलब रेट तो रहेगा मतलब आई वांट टू नो द इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन. करो. If you want you can write this as concentration of A भी लिख सकते हो. कोई कंफ्यूजन अगर हो रहा है तो keep it A. Keep it concentration of A. X is equals to 0 at T is equals to 0. K naught तो सेम रहेगा. K naught is a constant अंदना. At T half K naught into half हो जाएगा. Okay. Can you send this to me in the question tab? आप लोग मुझे हर different times पे values put करके question tab में एक बार भेजोगे? Send it to me in the question tab. Do it. हाँ जी, we are doing all this for zero order reaction. Take it positive or negative. ठीक है, take it as a mod. Take it as a mod. ठीक है, ताकि positive negative matter नहीं करेगा आपको. ठीक है, take it as a mod guys. You just need to remember the integrated rate law equation. That's it, Siddharth. If you remember the integrated rate law equation, everything becomes easy. ना ना ना, not this way. ठीक है, मैं आपको कराती हूँ. मैं आपको कराती हूँ. Guys, here, please come over there. Okay, just get over there. ठीक है, let me make you do all this. We know the rate is constant at time t. We have derived the equation dx by dt k naught integrated rate law is equals to k naught into t. Okay, चलो. तो first of all, what we have taken जब हमने ये निकाला था, when we have determined this differentiated rate law or the integrated rate law, तो what kind of reaction we have taken? हमने कौन सा reaction लिया था? We have taken A gives you P, A gives you P as a product, right? और हमने कहा था that initially we are having the concentration as A, this is as 0 and this is getting A minus X and this is getting X. तो जब हमने ये किया था तो that was this X. तो ये जो आपका X यूज हो रहा है, पहले इसको तो देखो ये क्या है? This X जो हमारे को differentiated rate equation में जो X मिल रहा है, what is this? This X is this, the final product that we are getting at any time T. This T is time and here as well this K naught is a constant. This T is time but this X is again this value, है ना? तो ये जो X है वो ये value है, ये जो X है ये value है. Is this clear? हाँ, तो अब मैंने आपको बोला at time T is equals to 0.
एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0 आपका x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0 अगर आप यहाँ पे t को 0 पुट कर देते हो तो x क्या हो जाएगा? x 0 हो जाएगा. इफ आई विल पुट t इज इक्वल्स टू 0 इन दिस, x विल बिकम 0, राइट? ओके, इफ आई पुट t इज इक्वल्स टू t हाफ, अगर मैं टाइम को t हाफ पुट कर देती हूँ तो मेरा ये क्या हो जाएगा? k नॉट रिमेन k नॉट, बिकॉज़ वी नो दैट k नॉट इज कांस्टेंट. k नॉट तो कांस्टेंट है, इसमें तो मैं कुछ कर नहीं सकती. तो आई विल बी गेटिंग द इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन एज k नॉट t हाफ. मैंने ले लिया, आई एम टेकिंग the t as t हाफ. दिस इज इक्वल्स टू x. सो व्हाट इज दिस x देयर? यहाँ पे x का वैल्यू क्या है? x is basically the value of product p, that is a by 2. So this will become a by 2. Are you getting it? बात समझ आ रही है? I'm putting these values t half and the concentrations in this integrated rate law में मैं put कर रही हूँ. तो आपको ये तो पता होना चाहिए what is x there. So again, let's do for one more time. At t is equals to t 3/4. So I can say that at t 3/4 k naught to constant है. We know already k naught is constant, so we need not to do anything with k naught. K naught remain as it is. T is getting t 3/4. T 3/4, which is equals to x. So what is x there? Now here x is 3/4a. Here x is 3/4a. Are you getting it? समझ आई बात? हाँ. Okay. Now I am saying that at any time t, that is when the reaction is getting 100%, or at t 100%. So what you can say, this is t and this is 100% of the reaction. या तो आप इसे 100% लिख दो, t 100% या कम t, whatever you write, or kt you writing. तो ये आपका क्या हो जाएगा? This will be a. This is directly proportional to a. अभी everything is clear. अब आप समझे what we are doing. So first of all you need to know कि जब आपने ये k not t is equals to x लिया, so what is this x, what is this t, तो थोड़ा आपको ये idea होना चाहिए, है ना? So t is a variable. t तो change हो रहा है, time तो change हो रहा है, time could be 0, could be 10 minutes, could be 20 minutes, could be 50 minutes. So time is a variable which is changing and x is also a variable which is changing. तो x भी बदल रहा है, but what was this x which we have taken in solving this equation? तो जब हम लोग ने इस expression को लाया था तब ये x क्या था? तब ये x ये था. तो आपको यही वाली values लेनी होंगी ना, right? तो आपको ये वाली values लेनी होंगी ना. Okay, now we can solve it further. Now we can simplify it further. Now I can say that here the time is 0, right? That is a t0, this is 0. I can say that the t half value is equals to a by 2 k naught. मैं ये लिख सकती हूँ, right? I can write a upon 2 k naught. अब आपकी मर्जी, आपको ये a लिखना है या a नॉट लिखना है, whatever you have to write. This is your call, है ना? So as per this I have taken a, so I will be taking a there. ठीक है, मतलब the initial concentration, or in simple words I can say this is the initial concentration, है ना? अब कोई इसे a नॉट लिख देता है, sometimes you write c नॉट, sometimes you write a, sometimes you write x. So we need to know कि हमने किसको क्या माना है. Okay, आंख बंद करके करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा. So you must know that what you have considered is what. अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? If I want to find out the value of t 3/4, this comes out to be 3/4 a upon k naught. ये आ जाएगी. और अगर मैंने आपको बोला I'm considering the time as t or the 100% or at any time t, so this will become a upon k naught. Is this clear? So this is when the 0% reaction is being done. This is when the 25% reaction is occurring. When 50% reaction is occurring. When 75% reaction is occurring. When 100% reaction is occurring. Clear? 0%, 50%, 75%, and 100%. Very nice. Okay. So there is one more thing. एक और चीज बताऊं. Okay, please guys make this as a chart. Okay, इसको as a chart बना लो. Please note it down everything. Please note down everything, guys. For the zero order, differential rate law is this, integrated rate law is this. When we have considered this as a reaction, we have finded this as the differentiated rate law and integrated rate law. And for the different time periods, we will be getting this as the answer. Here, the k naught is a constant. Okay, fine. Let it be there only. K naught is equal to constant. Okay. So now, guys, we know that t half is what? T half is a upon 2 k naught. A upon 2 k naught, right? So if I want to write the other expressions in the form of t half, how I can write? अगर मुझे इस same equation को भी t half के terms में लिखना है, तो how I can write? I can say that t 3/4 is also is equals to, मैं ऐसे भी कह सकती हूँ that this is also be is equals to 3/2 t half. ध्यान से देखो, 3/2 t half. If I do like this, 2 into 2, अगर मैं इसे 2 into 2 कर देती हूँ, rather than 4, if I write it as 2 into 2, I can say that this is 3/2 t half, right? Okay. और अगर मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देती हूँ, if I multiply 2 and 2 over there, तो what I can do, because I can do now mathematically, this is true, I can do 2/2, numerator multiplied by 2, denominator multiplied by 2, so this will become again 2 times of t half, right? So this is also true. तो हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि t 3/4 is equals to 3/2 of t half and t is equals to 2 t half. Is this clear? Very nice. Okay. Now guys, please tell me the graph between. ठीक है, so this is it. यहाँ तक का सब लोग please note down कर लो. For the zero order reaction. Done. Very nice. ठीक है. Now the another thing which I'm asking you is, please tell me the plot between a and t half. Tell me the plot between a and t half. कहाँ से बताओगे? a is equals to 2 k naught t half. Okay. ठीक है fine. मतलब यहाँ से बताओगे, है ना? यहाँ से बताओगे. So if this is my y is equals to x axis पे we are having a, है ना? तो ये मेरा slope हो गया, है ना? So if t half is my y, a is my x axis, then 1/2 k naught is my slope, and the intercept is 0. There is no intercept, right? तो ये मेरा slope क्या आएगा? ऐसे I will be getting a positive slope. Okay, ये मेरा t half हो गया. This is my a, and the value of slope will be 1/2 k naught, which is a positive slope. Is this clear? Very nice.
The another question is, tell me the plot between T 3/4 and A. T 3/4 and A. M is equals to 3/4 K naught. Perfect. So only the slope is changing. है ना? Only the slope is changing. And similarly, we can do this for the E and for the 100% of the reaction. This will be A. This will be directly proportional to 1 by K naught. Clear? सबके लिए पॉजिटिव स्लोप ही आएगा. Okay. Perfect. तो अब अगला क्वेश्चन ये है, you have to do a plot between log T half and log A. अब बताओ. So basically what was T half? T half is equals to A upon 2 K naught. A upon 2 K naught. I'm saying that take log. To just multiply this by log, multiply this by log. Is it? तो ये हो जाएगा log T half is equals to log, क्या करें इसे? log A minus log 2 K naught. तो अब आपको किस किस में बताना है? This is your y axis and this is your x axis, है ना? This is your x axis minus का log 2 K naught. K naught और K. Okay, so this is basically the interceptor, है ना? ये आपका क्या है? इंटरसेप्ट है. और इंटरसेप्ट आपका कैसा जा रहा है? नेगेटिव जा रहा है. ओके, तो हाउ विल यू डू देन? नेगेटिव से स्टार्ट होगा. परफेक्टली राइट. तो नेगेटिव यहां पर आएगा और नेगेटिव यहां पर आएगा, है ना? तो अगर मैंने आपको बोला, सो हियर वी विल बी हैविंग डिफरेंट डिफरेंट केसेस. ठीक है? x तो पॉजिटिव है, हाँ स्लोप पॉजिटिव रहेगा. एग्जैक्टली, द स्लोप इज पॉजिटिव. सो दिस इज योर y एक्सिस, दिस इज योर x एक्सिस. द स्लोप विल रिमेन पॉजिटिव. स्लोप तो पॉजिटिव ही रहेगा, बट स्लोप शुरू कहां से होगा? वेदर वी मे स्टार्ट अ लाइन फ्रॉम दिस 0, यहां से शुरू करें, यहां से शुरू करें, कहां से शुरू करें? अगर मैं यहां से शुरू करती हूं तो ये मेरा नेगेटिव हो गया. अगर मैं यहां से शुरू करती 0 हो गया. इफ आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द, ये मेरा नेगेटिव हो गया. दिस इज आल्सो नेगेटिव, दिस इज आल्सो नेगेटिव. सो फ्रॉम देयर वी हैव टू स्टार्ट नेगेटिव. सो व्हिच नेगेटिव वी हैव टू स्टार्ट? नीचे वाला नेगेटिव. हाउ वुड यू से दिस? ओके, लेट्स फाइंड इट. सो गाइस, बेसिकली इंटरसेप्ट आल्सो वी कैन कैलकुलेट. अगर मेरा k नॉट का वैल्यू, इफ माय k नॉट वैल्यू विल बी नेगेटिव, लेट्स से इफ k नॉट इज नेगेटिव, तो अगर आपका k नॉट नेगेटिव होगा तो क्या हो जाएगा? ये माइनस माइनस प्लस का log 2 k नॉट हो जाएगा. तो ये पॉजिटिव हो जाएगा. और अगर k नॉट, मतलब इफ आई वुड से दैट k नॉट इज लेस देन 1, है ना? और यू कैन से k नॉट इज लेस देन 1. और अगर मैंने कहा k नॉट इज इक्वल्स टू 0, तो क्या हो जाएगा? द होल वैल्यू विल बिकम 0. सो द इंटरसेप्ट विल बिकम 0. और अगर मैंने बोला दैट k नॉट, बिकॉज़ इट्स अ कांस्टेंट, दिस k नॉट इज व्हाट? दिस इज द कांस्टेंट. सो दिस कांस्टेंट कुड बी एनीथिंग. ये कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है. एंड इफ आई एम सेइंग दैट, अरे गड़बड़ कर दी, इफ दिस विल बी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा. हां, ठीक है, ठीक है, ठीक है. एंड इफ आई एम सेइंग दैट दिस k नॉट इज पॉजिटिव, इज ग्रेटर देन 1, और आई एम सेइंग इट इज पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा? दिस विल बी नेगेटिव, है ना? तो नेगेटिव आएगा. तो इफ माय k नॉट इज लेस देन 1, if my k naught is less than 1, so my values will be positive. So I will be getting this as a plot when k naught is less than 1. ठीक है? When k naught is equals to 0, the intercept, the whole intercept will become 0. Okay? And when the k naught is greater than 1, this is it. Got it? समझ आ गया? So basically it is totally depending upon the value of k naught, what kind of k naught you are having. Okay. अच्छा, tell me the unit of k. You just said कि ma'am, the integrated rate law says that k naught t is equals to x. So if I want to know the rate constant k naught is equals to x by t, so what will be its unit? Unit of k naught क्या हो जाएगा? x is the concentration. X is the concentration or upon time, so that will be the moles per second. So moles और concentration में कोई difference होता है? Number of moles or concentration? Moles per liter per second. Per liter per second ये होगा. There is a difference between the number of moles and the concentration. Concentration is number of moles per liter of solution. That is molarity. Got it? Got it? So this will be moles per liter per second. So this is the all which you need to know about the zero order reaction. तो आपको zero order के बारे में बस इतना ही पता होना चाहिए. This much you need to know about the zero order reaction. So similarly, can you do for the first and second order? And now I want you to do some questions. ठीक है, मैं आपको कुछ questions कराना चाहती हूँ. So let's begin with that. एक मिनट दो बस मुझे. Let me get the questions. मेरे पास DPPs भी हैं. आंसर बताओ. देखो, this is a DPP number 1 where 1 2 3 4 5 there are many questions. ठीक है? So all these questions you have to do from the DPP number 1. Okay, they are 14 number. 40 question है. ठीक है? In the DPP number 1. They all you need to do.
and there is one more DPP on chemical kinetics. In update section, I will be adding it. Okay, so this is another DPP. See, now you can tell me now what is the right answer for this question. In this DPP, how many questions we are having? Let me just check. In this, we are having 41 questions. एक second. That is 40 plus 41. Total number of 81 questions. They are sufficient for you. Hanji, they are going to be sufficient for you. So this much questions you have to do. I have added one DPP. Okay, so I might have forgotten about it. So these two DPPs you have to do. Okay, so can you start telling me the answers for the question number 1 of this DPP number 2? चलो शुरुआत करो. इसका आंसर बताओ. So bad. Do it again. Do it again and send it to me in the question tab. Abhishek, the question is saying units of rate constant of first and zero order reactions in terms of molarity unit are respectively. Take your time and do it again. And send it to me. दो के थे. अच्छा, can you tell me the rate constant, the unit of rate constant for the first order reaction? बता सकते हो मुझे? निकालो, कोशिश करो खुद से निकालने की. Per second. तो देखो, listen me guys. The rate constant for the zero order आपने कैसे निकाला था? You were saying for the zero order rate is equals to k naught और a की power 0. This is what you said ना? है ना? तो rate and which is also is equals to dx by dt, है ना? That is the concentration. This is also is equals to dx by dt. That is the concentration. So I just asked कि अगर ये मेरा a की power 0 है, तो if this is a की power 0, तो I can say that this dA is equals to dx by dt. But if this a की power 0 for the zero order, तो zero order के लिए क्या हो जाता है ये k naught is equals to dx by dt. और अगर मैं कह रही हूँ कि a की power 1 है for the first order, तो ये क्या हो जाएगा k naught a naught की power 1 is equals to dx by dt. और we can say that k naught is equals to dx by dt upon a naught. तो अब आपको ये नहीं पता, ये भी कॉन्सेंट्रेशन यूनिटी को निकालनी है. सो दिस इज अ कॉन्सेंट्रेशन टर्म, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, तो मतलब मोलारिटी पर सेकंड. और ये भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म है dx, द चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन, एंड दिस इज आल्सो कॉन्सेंट्रेशन टर्म a, the concentration of reactant. So they will be cancelled with each other. So this is only the change in time, that is only per second. So that's why for the zero order reaction this will be moles per liter per second, and for the first order reaction it will only be per second. So this is the way how we have to do. Acha, now please tell me what is the unit of rate constant for the second order reaction? For the second order. Same as 1? No. 1 by molarity second. Okay, देखो let's find it out. हमें पता था कि जब भी किसी चीज का रेट निकालते हैं तो रेट इज इक्वल्स टू k. If you are saying it is a second order, I can write k2. I can write k2 कांस्टेंट, और यू राइट एस के, आपकी मर्जी, के ले लो. सेकंड ऑर्डर का रेट कांस्टेंट, तो आई एम राइटिंग एस के2. ठीक है. एंड इसकी पावर a की पावर व्हाटएवर यू आर सेइंग दैट a गिव्स यू p, है ना? तो a की पावर क्या होता है? ऑर्डर होता है ना. सो व्हाट इज द ऑर्डर देयर? ऑर्डर इज 2. तो आप ऐसे लिखोगे कंसंट्रेशन ऑफ a की पावर 2. अच्छा, जब आपने ये लिया था तो व्हाट इज द चेंज इन द कांस्टेंट, और आपने एक तरीके से कैसे रिप्रेजेंट करते हो इसे? फॉर दिस वी नो ना, दिस कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड एज dx by dt. अब मुझे ये तो देखना नहीं है वेदर आई एम टॉकिंग अबाउट रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स. सो आई कैन सिंपली से द रेट इज आल्सो इक्वल्स टू dx by dt. रेट को इसको भी बोलते हैं. रेट नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं होता है. ओके, रेट मॉड में होता है ना? So if you are talking just about the rate, है ना, तो rate is in mod, it is not negative or positive. When we talk about the reactants and products, yeah, they could decrease or they could increase, but the rate is rate, it is mod. तो speed कभी भी negative होती है आपकी. When you talk about the speed can never be negative, नहीं ना? तो वही चीज है. तो this rate can also be written as dx by dt. dx by dt is equals to k2 a की power 2. अब मुझे क्या निकालना था? I want to determine the value of k2. So this will be dx by dt 1 upon concentration of a का square, right? Now this is our concentration term. This is a concentration term. So concentration term and this is concentration का square. And this is second. The concentration and one concentration is being cancelled with each other, so we will be getting 1 upon concentration or second. तो ultimately ये क्या हुआ? 1 by molarity second. तो आप इसे बोल सकते हो per molarity per second, ऐसा बोल सकते हैं ना? और we can say that moles per mole liter per second, ऐसे भी बोल सकते हैं. Per mole liter per second. Why? Because this molarity is equals to moles per liter का inverse और second का inverse. So is this true? तो ये किसका यूनिट हो गया? This is a unit for the second order reaction. So now you understood कैसे निकालना है. तो हमेशा वी हैव टू लाइक इक्वेट द टू एक्सप्रेशंस. तो जो भी हमारी रेट डिटरमाइन करने की दो एक्सप्रेशंस है, वी हैव टू इक्वेट देम. ओके. अच्छा, अब देखो फॉर दिस क्वेश्चन इट इज बीइंग गिवन फॉर a plus 2b gives you c. रेट इज गिवन बाय r is equals to a b की पावर 2. देन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज, इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा? So if the question is asking you about the order, तो क्वेश्चन ने आपको रेट एक्सप्रेशन दिया ना,
है ना. तो बेसिकली वी कैन से दैट दिस इज एन एलिमेंट्री रिएक्शन बिकॉज हियर द ऑर्डर एंड द मॉलिक्युलरिटी इज द सेम. यहाँ पे ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी सेम है, तो मतलब द नेट रिएक्शन एंड द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज द सेम. नेट ओवरऑल रिएक्शन और जो हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है वो सेम है ना. दैट्स व्हाई a b की पावर 2. दैट्स व्हाई द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 3. वेरी गुड. अगला क्वेश्चन इज दिस, द डिफरेंशियल रेट लॉ फॉर द रिएक्शन. वेरी गुड भाटिया, रोहित, अभिषेक, स्नेहा, शिवानी, अंकिता, विनिशा, शुभम, वैभव एंड सुयश. क्यों गड़बड़ किया काफी बच्चों ने? अरे वी नो दैट दिस हैज टू बी नेगेटिव, सो माइनस का d by dt of h2 माइनस का d by dt of i2 is equals to positive 1 by 2 d by dt of hi. तो can't I multiply by 2? क्या मैं यहाँ पे 2 2 और 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकती? दिस विल बी कैंसल्ड और ये मेरा 2 हो जाएगा. तो राहुल मैंने ये कर दिया ना. गॉट इट. ये क्वेश्चन करो. क्वेश्चन दे रखा है द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन इज दिस. आपको रेट इक्वेशन दी गई है. दिस इज ct. This is ct, not cr. This is ct. Okay. So this is the integrated rate equation which is given to you. The straight line graph is obtained by plotting. आपको straight line graph चाहिए. Tell me how we will be getting a straight line graph. अरे इसमें गड़बड़ है. This is rt. एक सेकंड. There is some printing error. There is some typing error. रुक जाओ जरा. Can you do this question? Do this question. Okay. Giving you a poll. Okay, very good, Bhatia. Okay, so let me discuss the question with you guys. The rate law for the reaction between the substance A and B is given by rate K, A की power n and B की power m. On doubling the concentration of A, so if I'm saying 2A, अभी तक तो मैंने बोला है कि A plus B gives you something something और it depends upon A की मतलब जो भी हमारा rate determining step है on which it depends upon A की power n and B की power B is m. But now I'm saying that on doubling the concentration of A, तो we are doubling है ना. तो अभी मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि ये मेरा 2A हो गया है ना. तो concentration is double. तो double में हम क्या करेंगे? A की power 2n करेंगे या 2A लेंगे? Tell me. मतलब अभी तक अगर मैं A का कुछ concentration लेती थी, मुझे उसका डबल करना है. 2A लेंगे. Very nice. तो this will become 2A की power n and having the concentration of B. तो B को half कर देना है. So that is B by 2 की power m है ना. As the ratio of new rate. So this is my rate new and this is my old rate है ना. Ratio of the new rate to the earlier rate of the reaction will be as. तो इसका ratio क्या होगा? तो rate new upon rate earlier, that is the old one, will be equals to K 2A की power n B by 2 की power m divided by K A की power n B की power m. Is it true? Is it right? तो आपको बस ये बताना, इसका रेशियो बताना है. यू हैव टू टेल द रेशियो. यू नीड नॉट टू टेल कि व्हाट इज के, व्हाट इज रेट. यू हैव टू टेल द रेशियो. तो एज पर द रेशियो दिस विल बी कैंसल्ड बिकॉज़ इट इज अ रेट कांस्टेंट. ओके, ये क्या हो जाएगा आपका? ये क्या हो जाएगा? आई कैन से दिस 2 की पावर n a की पावर n b की पावर m 1 by 2 की पावर m अपॉन a की पावर n b की पावर m. ये कट गया. 2 की पावर n बचा मल्टीप्लाइड बाय 1 by 2 की पावर m. सो हाउ यू कैन राइट दिस? यू कैन से दैट दिस इज 2 की पावर n into 2 की पावर minus m. मैं ऐसे लिख सकती हूँ, राइट? और आई कैन से दैट 2 की पावर n minus m. सो द राइट आंसर वुड बी C. तो क्या क्वेश्चन? ए की पावर 2n करने से तो रेट बदल जाएगा ना फिर अभिषेक. अगर मैं कोफिशिएंट बदल दूंगी, ए की पावर में अगर मैं 2 लगा दूंगी तो फिर तो रेट ही बदल जाएगा ना. इन द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप द कोफिशिएंट चेंजेस द रेट ऑफ द रिएक्शन. तो हमें सिर्फ कंसंट्रेशन को बदलना था, रेट को नहीं बदलना था. सो वी आर जस्ट सेइंग दैट वी आर चेंजिंग द कंसंट्रेशन. ओके,
That's it. Okay, so I will be updating the DPPs in the update section, so you can do them thoroughly. Okay, and in the next class we will continue with the second order and the first order reactions, which are quite same, है ना? तो अभी हमें first order और second order में कुछ effort नहीं लगेगा, because whatever we did in the zero order, we have to do the same thing in the first and second order. That's it. Okay, चलो bye, take care.